Hello everyone, in this video I'm gonna show you the best way of campaign settings and the right way to optimize your settings. If you are a product seller, you can upload your video in the Google Ads and you can grow your business in a minimum time, and this is the best platform. I got 400 views in just 30 rupees and my target amount was 100. And if you have the best quality video, if you can influence your viewers, you can get more subscriber and you can grow your channel. So for now, let's go to the campaign page. आप लोग देख सकते हैं कि मेरा campaign already running है. First of all, we'll click on the new campaign. Right corner पे जाइए and click on the create a campaign without a goal. जैसे कि आप सब लोग को पता है कि campaign create कैसे करेंगे. Click on the video option. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है. Keep as it is and press on continue. I will rename the campaign name. I have a video YouTube banner making. मैं उस वीडियो को प्रमोट करना चाहता हूँ. And the video is regarding about the banner making for YouTube channel. उसके बाद budget amount only 100 rupees डालिए. इसका मतलब गूगल आपको 100 से ज्यादा चार्ज नहीं करेंगे. I will run this ad only for 2 days. तो आज का डेट है 11th February. I will go up to 13th February. उसके बाद आप नेटवर्क्स पे क्लिक कीजिए. जैसे कि आप लोग को पता है, just unclick the third option. Now go to the location and my video will run only in India. So I will choose India. You can also go to the advanced search option. It depends upon the video. My video is regarding about the YouTube banner. और ये YouTube banner video उन लोग का लिए है जो YouTube में आना चाहता है. I will choose the right location for this video. I will choose Darjeeling, I will choose Jalpaiguri, I will choose West Bengal, and these are my nearest location. And also I want to run this video to my nearest neighboring countries. मैं बांग्लादेश पे क्लिक करना चाहता हूँ. I'm interested in Bhutan also. And also Nepal. और if आप प्रोडक्ट सेलर है, you can sell your video in your city area. ये बहुत सिंपल है. And this is my locations and my countries, my place. If everything is done, I will go to save now. और नीचे जाइए और लैंग्वेज पे हिंदी एंड इंग्लिश एज इट इज रहने दीजिए. और इन्वेंट्री में आप एक्सपैंड इन्वेंट्री में क्लिक कीजिए. एक्सक्लूड टाइप्स एंड लेबल पे दो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड वन. रिलेटेड वीडियोस लीव एज इट इज and go to devices and click on second option. ये ऑप्शन आपको खुद ही चूज करना होगा. I want to run my video in computers, tablets and mobile phones. But never choose the TV screen option क्योंकि TV screen पे मैं ad run नहीं करूँगा because there will be no click option in the TV screens. Scroll down कीजिए और frequency पे जाइए. ये ऑप्शन का मतलब है for one person how many times you want to show your ads. तो मैं 1 week करूँगा एक आदमी को. 1 week के गैप में you can show your ads again. Leave as it is. Directly go to the group ad name. तो मेरा ad group का name होगा related to the campaign name, banner making from mobile. ये demographics as it is रहने दीजिए क्योंकि I want to show to all the age limited. और उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट्स पे जाइए. देयर आर 2 ऑप्शंस इन दिस सेगमेंट, सर्च एंड ब्राउज. दोनों सिमिलर है. आई विल गो फ्रॉम द ब्राउज एंड आई विल चूज द टेक्नोलॉजी. और उसके बाद मोबाइल एंथुसियास्टिक्स में जाएंगे और सोशल मीडियम में जाएंगे एंड 3 ठो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि माय वीडियो इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड सोशल एंड मोबाइल. सो दैट्स व्हाई ये 3 ठो ऑप्शन मैंने चूज किया है. Now directly go to create your video ad. उसके लिए आपका YouTube video पे जाना होगा. Open your YouTube channel and go to your video and copy the link which video you want to promote. This is the video that I want to upload. आज का डेट है 11 February
और मैंने ये 21st जनवरी पे अपलोड किया था 2022 and I got only 39 views till now. Now what I will do is I will copy the link of this video और उसके बाद गूगल एड्स पेज पे जाके आपका वीडियो का लिंक पेस्ट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, स्किपेबल एड बनाइए। आपका वीडियो इस तरह का होगा। यू कैन सी द प्रीव्यू एट द राइट हैंड साइड। आपका फाइनल URL एंड द डिस्प्ले URL विल बी द सेम। कॉल टू एक्शन पे क्लिक कीजिए एंड आई वांट टू क्लिक वॉच नाउ। It will look like this. Now write the headline of your video. And guys, don't forget to check the preview. और फिर से at the last write ad name. Guys, मेरा impression तो 750 से ऊपर हो गया. And that is a good result. और guys, this is the important part. आप लोग को पता होना चाहिए कि अब Google 10 पैसे and 20 पैसे में ads run नहीं करेंगे and minimum 0.75 पैसे पे Google ads run होगा. I will give 3 rupees for 1 click. And trust me guys, you will not lose the money. Everything is done. Click on create a campaign. As you can see, today is 11th Feb. So my campaign create date is 11th Feb till 13th February. So recheck your settings again, and if it is done, click on continue. So my campaign is created. And if you're getting too much views, then just you go to the CPV settings, and from here you can decrease the amount. And also if your budget goes down, you can add budget from here. And guys, this is the date, and after 3 days you have to add the date again. For the last time we will see the views and the analytics कि इस वीडियो पे only 29 views है। 21 जनवरी पे अपलोड किया था and the today's date is 11th February 2022 8:43 p.m. Hello guys, I am again in a campaign page after 1 day और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया and we will see today's date and time. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि today's date is 12 February and the time is 8:11 p.m. almost 1 day हो चुका है। और फिर से campaign page पे जाएंगे and as you can see that this is my video ads 11th February में मैंने create किया था। अभी आपका इस वीडियो का टोटल स्टेटस आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि फ्राइडे पे गूगल स्टेटस अवेलेबल होगा only on Friday in a week. Now we will see the views in the YouTube channel. So let's go to the YouTube channel right now. ये मेरा चैनल है and यहाँ से मैंने वीडियो अपलोड किया था regarding YouTube banner video. इस वीडियो के फर्स्ट सेशन में आपने देखा था कि there was only 39 views. And here you can see that I got approximately 400 views इस वीडियो पे and in 1 day. और इस सब के लिए Google Ads हमको 30 rupees चार्ज किया था. And guys, आप लोग भी same strategy try कीजिए and comment down me below. वीडियो लंबा हो चुका है, so guys, this is how it is done. Thank you for watching my video. If you like my channel, please do subscribe. I will be coming up with more videos. And till then, we will meet again.